that Sarah sent me this PR Raman Hamara talk to me every single. Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing great and you guys are having an amazing day. Welcome to another vlog and I hope कि आप सबकी बहुत ही अच्छा टाइम, यू हैविंग एन अमेजिंग टाइम. बट यहाँ पे इतनी गर्मी हो चुकी है ऑनेस्टली, एंड दैट व्हेन यू गो आउट यू फील लाइक यूर मेल्टिंग. बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है जस्ट लाइक पाकिस्तान, बट अदरवाइज इट इज़ रियली बैड. इट्स रियली हॉट which is very annoying. But अभी मैं थोड़ा काम से बाहर गई थी and my day started really early today. But अभी I'm home and I am invited to a dawat. It's my mom's friend's daughter, नहीं, it's my mom's friend's dawat. तो उनकी बेटी की graduation की party है, so we have to go there. We have to wear desi. But I still don't know what I'm going to be wearing, which is very confusing. I have selected 2 dresses, but I'm not sure which one I'm going to be wearing today. So we're just gonna figure that out in a bit. Not कुछ देर पहले कुछ काम से गई थी, तो I just got home, so I'm a little tired as you can see from my face. But now we have to get ready, and क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, so we're gonna get ready and just थोड़ा घर भी सही करना है, and yeah, that's about it for now. So you guys, let's just freshen up a little bit and wash your face and everything. Do a little skincare because we look very tired. We don't want that. This one is cute. You guys know that CeraVe sent me this PR package में, so I love this. I've been using this for so long, but I'm absolutely loving it because it takes away all the dirt and everything on my face. So yes. अभी मुझे double cleanse करना था, but I was too tired for that. So I thought I'm just gonna do this CeraVe right now. So I'm done with washing my face. Looks all clean now. I have this stupid mark that just won't go away for I don't know what reason. But ये आता जाता रहता है, मतलब आएगा जाएगा. I have a pimple over here and then it's gone and then it comes back again, so I don't know what's wrong with it, but I think we've just made peace with each other now. Okay, so my face is all clean and अब हम थोड़ा ज़्यादा स्किन केयर को कुछ नहीं करती मैं, बस सिंपल सा एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ. एंड बिकॉज यहाँ पे मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, सो आई यूज़ दिस फार्मेसी का हनी हेलो विच इज़ सो गुड. मतलब इट मॉइस्चराइजेज माई फेस on an other level. It is that good and matlab full on hydration. When I want my makeup to stay long and look nice, this is what I use, and a little goes really long way. I've been using this for so long, but and abhi bhi chal raha hai mera. And the best part, it not just moisturizes your face, it also helps with the skin barrier, which is amazing. So I really like this one. सुबह मैंने लगाया था Skin Fix का, which I'm also liking. It has helped in my skin texture a lot. मैंने उसका मुझे उन्होंने Sephora ने उसका sample दिया था with one of my orders, and I didn't use it since like I haven't used a lot of samples of theirs what they sent me, but मैंने Skin Fix का sample try किया था about like 2 months ago and I loved. मेरे इतना छोटू सा था and I did try it and then I absolutely loved it. तो मैंने उसका बड़ा वाला मंगवा दिया था and I'm using this Say का, what is this, Glowy Super Gel, because I want my makeup to look a little glowy. That is why we're using this. मैं ये हमेशा यूज़ नहीं करती, कभी कभी, बिकॉज फिर कभी कभी मेरी स्किन वैसे इतनी ऑयली हो जाती है कि मुझे एक्स्ट्रा ग्लो का ज़रूरत नहीं पड़ती. So that is why I'm putting this on, and then we're just gonna wait like a minute or two and then we're gonna use the foundation.
रेगुलर में मैं यूज़ करती हूँ शार्लेट टिलबरी, बट अभी मैं वो नहीं कर रही. अभी आई एम गोना यूज़ द नार्स वन. मैंने ऑर्डर किया था बट इसका शेड डिफरेंट आया था, तो मैंने अब इसका डिफरेंट शेड मंगवाया, मीडियम 3, क्योंकि यहाँ पे आके मेरी स्किन टैन भी हो गई है. सो दैट इज़ व्हाई आई एम गोना बी यूजिंग दिस टुडे. My skin looks super hydrated, and on some days I also love this when I want my makeup to stay really long. This is Glow Recipe ka Dew Drops, helps with the makeup, with the long lasting and everything. मैंने इनका सेट लिया था बट मैं इतना ये वाला यूज़ नहीं करती, द टोनर. दो आई लाइक इट, I did used to use it but not anymore. I do it sometimes, not so much. So let's just put the makeup on. I am gonna be using my camera as mirror today. I'm not gonna be using a mirror. So let's hope it turns out okay. मैं तो फाउंडेशन नहीं लगाती बिकॉज जब मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा फेस बहुत ही केकी हो जाता है. So I try to avoid मतलब like a heavy layer of foundation. I just need it to cover mostly like the marks and everything. But वो भी हल्के से हैं तो वो हल्के से cover हो जाते हैं. And I just want my skin to look even. तो मुझे इतनी ज़्यादा मुझे coverage पसंद है, but इतनी ज़्यादा नहीं कि मेरा full heavy base लगे. Because I've seen so many videos जिसमें बोलते हैं कि आप ऐसे ऐसे blend नहीं करें, उसकी coverage बहुत ही कम आ जाती है and all of that. But I do it क्योंकि मुझे जल्दी वाला चाहिए होता है, तो I just do it like this. People who follow me on Instagram see my makeup videos. तो उसमें मैं कुछ भी नया लाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं उसमें फिर दिखा देती हूँ. मुझे लग रही है मेकअप ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज व्हेन आई गो दावत में तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने वीडियोस बनाऊँ. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज बनाऊँ. यहाँ पे ग्रेजुएशन इज़ ऑनेस्टली अ वेरी बिग डील, विच इज़ वाई पीपल हैव लाइक दावत्स एंड एवरीथिंग फॉर इट. अच्छा, वैसे मैं अभी रिसेंटली दूसरा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ टू फेस्ड का, बट अभी I'm just gonna be putting Huda Beauty. मैं थोड़ा लाइट यूज़ करती हूँ just to give it like bright feel to it, and then I am gonna be using. अच्छा, वैसे मैं ना अभी मैंने सोचा था कि मैं करूँगी Rare Beauty का, but this BBA by Sulaiman, this Pakistani brand, they sent me PR when I was in Pakistan and I so love their blush. It is so good कि मैं रेगुलर में भी ये यूज़ करती हूँ, पर जब मुझे थोड़ा सा डबल ब्लश लगाना होता है like a liquid and a powder one, then I use this नीचे because it is really good honestly, and sometimes I like it better than Rare Beauty honestly, क्योंकि मैंने ज़्यादा जो मुझे पाकिस्तान में PR मिले थे वो मैं नहीं लेके आई थी. But some things that I absolutely loved, I did get those, and honestly I loved this one. I almost use it every day. तो मुझे ये नहीं पता कि अंदर कितना बचा है इसमें, उसकी हालत भी से भी पता चल रहा होगा, but I really love this one. So whenever I hear someone coming here कि पाकिस्तान से आ रहा है, तो मैं यही सोचती हूँ मैं क्या क्या मंगवाऊँ, बट ये आई थिंक मैं मंगवाऊँगी. मुझे एक और चीज़ पसंद थी, बट व्हेन आई आस्क्ड देम इफ दे कैन डिलीवर इवन इन पाकिस्तान, वो बाहर तो शिपिंग नहीं कर रहे थे, बट व्हेन आई आस्क्ड देम इफ दे कैन डिलीवर इन पाकिस्तान, सो दे सेड कि वो भी मुझे एक PR मिला था विच आई डिडंट नो उस टाइम, बट देन आई स्टार्टेड लविंग द प्रोडक्ट्स, तो इसलिए फिर I wanted them here as well, but वो वहाँ पे भी डिलीवर अब उनका आई थिंक बंद हो गया है, पता नहीं क्या हो गया. So yes, it gives like a really nice pink blushy feel which I like, but इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ so that I don't run out of this one.
I'm already tired and I still have to get ready. I'm thinking I'm just gonna get ready and then I'm just gonna sit for a while so that थोड़ी देर मैं relax कर सकूँ. Even though I had coffee in the morning, it's still not enough. Let's blend this. इसको थोड़ी देर हो गई है, so let's blend this out. Yeah. I think I'm gonna wear the dress and then I'm gonna do my lips so that I can see. या फिर मैं पहले ही कर लूँ, I don't know. I'm still confused. To set the whole thing, I'm using Huda Beauty का baking powder. बिकॉज अब मैं इतना वो हो चुकी हूँ कि अभी मैं बस चाह रही हूँ कि ये जल्दी से हो जाए ताकि मैं I can rest for a little bit and then I can go with a fresh face, which I think is working with all the makeup and everything. I'm finally able to show a fresh face. Now I have these two shades for liquid eyeshadow. There's Stella. I don't know how to pronounce that brand, but इसका एक है Diamond Dust and the other one is Perlina. But let me show you the shades that I have. मैंने use नहीं करे अभी तक, but they're still back. Okay, so this one is like, I thought I had like a little with the golden tone as well, but apparently not. Okay, yes, I can use this one. The diamond dust looks nice and might go with anything that I choose. आगे कौन सा पहनना है जो भी है. So let me put this on top. Let's see how this one looks. Because it isn't so bad, it's nice. Let me just blend it out a little so ये इतना ज़्यादा नहीं लगे कि मैं किसी की शादी में जा रही हूँ. It looks nice. Okay, looks super nice. I don't know if you guys can see it, but it looks really nice. This is approved. Looks pretty, but it would have looked really pretty with eyeliner, but the problem is that I don't know how to put eyeliner. So let's see if we can do something about it. I have She Glam का एक जो मुझे फिर से PR आया था. I don't know where that is right now. Yes, it's this. So it is like the tattoo one. I don't know if you guys can see it. So I did try it a couple of times, but इसमें भी मसला ये होता है कि एक मुझसे ऊपर हो जाता है, एक साइड पे हो जाता है. Let me try again if we can do something about it right now. I don't know what I did. दो लाइनें हैं दोनों में, but I'm just gonna put it a little bit and then I'm gonna fix that issue. Still messed up. I somehow always know how to mess up my eyeliner because I'm that bad at it. Eyeliner. मतलब I look so funny. I look so stupid. एक पता नहीं कहाँ जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, एक आँख बड़ी लग रही है, एक छोटी लग रही है. Let's fix that. Always happens. उस दिन मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी, मैंने तभी भी लगाया था और तभी मेरे साथ यही हुआ था. फिर मैंने 2-3 बार पता नहीं उसको सही करने की कोशिश करी and then somehow it looked better, not good, better. I'm just gonna leave that for a while. I'm just gonna do my lips first. I'm gonna be using a brown liner for that.
I think I like brown liner with like a hint of pinkish lipstick or a lip, and then a lip gloss. Like a lip gloss is a must, and I think it looks really nice on my face, on my tone. I don't know, but it looks nice. Brown lip liner is so good. The ones who haven't tried it yet and think the brown liner is gonna be too much for them, they're wrong, because it's gonna look so nice. It's gonna look amazing. मुझे honestly पहले I had no interest in makeup. I didn't really care about makeup, yeah, getting makeup stuff and stuff like that. I wasn't that girly, whatever. I wasn't that. I was into other stuff more than this stuff. But then as time passed, I started liking it. I started trying stuff, and then now I'm not saying that I'm really good at it. I'm still learning, but I watched so many videos, I watched so many things about makeup. It's not hiding your whatever you think. कुछ लोग कहते हैं ना कि इतना मेकअप नहीं लगाओ, ये नहीं करता, but it's up to you, because it makes you feel good. That's what I think. That's why I do makeup. It has nothing to do के भाई मुझे society pressure and all of those things के makeup आना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है. There are a lot of people who look amazing without makeup, and they don't like makeup or something, but it's just to feel good. You feel nice when you're all ready, all glammed up and all that. It makes you feel good. And honestly, the people who do not get ready and they just like, we don't have to go anywhere, so we don't have to get ready, you're wrong. You should get ready for yourself. अभी recently मैं किसी को कह रही थी, because यहाँ पे Eid is very I think it's a little lonelier than in Pakistan, because Pakistan में तो हर कोई मिलने आते होते हैं families, even though Pakistan में भी इतना नहीं है, but यहाँ पे it's like a completely different thing, because a lot of people don't have their families over here and all that. तो मेरी भी किसी से recently बात हो रही थी, and they said कि भाई हमारी family नहीं है यहाँ पे, and I don't feel like getting ready. I was like, do not just get ready on Eid for other people. Get ready for your own self, because that is what matters. आप खुशी उसी से होता है, because if you don't feel good about yourself, nothing else is gonna be good for you. So nothing else is gonna be enough for you. Nothing else is gonna matter for you. So if you're happy from inside, and inside happiness, आप अपनी favorite चीजें करें. Do what makes you happy. And the one point you're gonna feel better, like 100%. Just get ready. आप makeup नहीं कर रहे हैं, but get ready, get dressed up, get freshen up, make your hair or something, and then I'm 100% sure you'll feel a lot better than how you were feeling before. Okay, so I did try to match my liner a little bit. मैं इतनी speech दे रही थी, so everyone must have been bored कि फालतू में शुरू हो गई है. But now I'm using this Ulta Beauty का mascara. I also like this one. मुझे मेरा ये भी है, but Maybelline का, but I'm not liking it so much these days, because इसको उतारना is a big task, and I'm not ready for that today, right now. This is also very nice. It gives a nice length, and as you guys can see, it already looks really nice. अगर पाकिस्तानी ब्रांड में बात करें तो मेरे पास मिस रोज का है, जो मुझे PR में आया था, एंड समहाउ बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग इट लुक्स सो गुड. आई डोंट हैव इट राइट नाउ ओवर हियर, बट माय सिस्टर हैज़ इट. तो जब मैं उसे लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग आई गॉट इट ओवर हियर, बिकॉज इट लुक्स सो डिफरेंट एंड नाइस. बट अपेरेंटली इट इज़ रियली 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 गुड. बाकी तो प्रोडक्ट्स मैंने इतने ट्राई नहीं करे थे उनके, बट दिस स्टेड विथ मी टिल हियर. So you guys can understand how good that is, and it is amazing. मतलब it is waterproof, but it is not so much waterproof like this Maybelline वाला कि वो मतलब पड़ा रहे और बिल्कुल it gets all really bad. But it is the Miss Rose, I don't know उसका नाम क्या है, but it has like a something made up on it. So I will show you guys in my next vlog or something, or maybe on my Instagram story. But that is really good.
बट मुझे ये वाला भी बहुत पसंद है. मुझे PR वो I have the SheGlam वाला as well, but I haven't tried it so much, so I can't say much about it. But look at this one. This is really good. This is Ulta ka their own mascara. I think I will be repurchasing this one when I'm out of this. And eyeliner is always like this के आधा होता है, आधे में मैं गिव अप कर देती हूँ. So yes, I am now tired. मुझे कुछ लिप्स पे कुछ और लगाने का दिल नहीं कर रहा, so मुझे करुणा ब्रांड ने यहाँ पे PR भेजा था, एंड दे ऑल्सो सेंट मी दैट टिंटेड लिप ऑयल जो मैं भी रिसेंटली कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड आई ऑल्सो लव इट अ लॉट. It doesn't have like a lot tint, which I think is not a good thing. मतलब not a good thing नहीं, इसमें थोड़ा और tint होना चाहिए था, because कुछ टाइम के बाद ये इसका आपके लिप्स से हट जाता है. It should have been a little more tinted, but it's this. I was first scared to use this because it was so dark. I was like पता नहीं कौन सा shade आएगा, but as you guys can see, it gives such an amazing shade of pink. और when it settles तो ये और भी अच्छा हो जाता है. एंड इवन when लिप ऑयल ख़त्म हो जाता है तो लिप्स थोड़े से पिंक रहते हैं for a little bit, so that is good. That is done, and I'm not gonna do much on my lips now. That is it. Simple but good. इन्होंने मुझे और भी बेचारों ने चीज़ें भेजी थी जो मुझे अभी, बिकॉज मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत टाइम, तो आई वॉज जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम ऑल दैट, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला. एंड एट सम पॉइंट आई हैड टू गो टू ER टू बिकॉज आई वॉज दैट बैड इन बैड शेप. तो फिर आई वॉज जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम ऑल दैट. सो मुझे इन बेचारों ने भी भेजा था, और इन्होंने स्किन केयर भेजी थी, एंड एक और भी था दैट आई डोंट रिमेंबर, स्टिल ओवर देयर. तो मुझे उनका भी अभी करना है. सो आई एम जस्ट गना बी मोर एक्टिव. दैट इज़ द ओनली रीज़न आई थॉट देयर, मतलब when you get sick and then you get better, then you think like it is important to be active because it's really keeps your mind away from a lot of things. So I am going to be more active because Instagram पे भी अब I am going to be uploading a lot of stuff because मुझे PR भी इतने आ चुके हैं जिनकी मैंने अभी तक चीज़ें अपलोड नहीं करी. So I'm going to be doing that as well. अब आई थिंक दिस व्लॉग इज़ रियली लॉन्ग ऑलरेडी, लाइक मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो चुका है. सो आई डोंट नो इफ आई एम गोना बी कवरिंग दैट इन दिस द इवेंट इन दिस, और आई एम नॉट गोना बी डूइंग दैट. सो आई डोंट नो, लेट्स सी. बट लेट्स जस्ट apply the blush a little more because I think it's a little less, not so much, but मेन जगहों पे. मेरा eyeliner मुझे इतना बुरा लग रहा है ना अभी honestly, but there's nothing I can do about it. What's done is done. So done. That is it. I am done. And now I look fresh. पहले मेरी हालत इतनी तबाही लग रही थी, एंड मुझे अभी ये भी इतनी पसंद आ रही है बाथ एंड बॉडी की. इट्स बाथ एंड बॉडी, इनकी जो डिज्नी की कलेक्शन आई थी, सो इट्स सिंड्रेला, प्रिंसेस सिंड्रेला. सो आई रियली लव दिस. एंड वन अदर वन दैट आई एब्सोल्युटली लव, एंड मुझे इसको इतना यूज़ करने में भी होता है बिकॉज इट्स सो गुड. इट्स ऑलवेज एंड फॉर एवर. इट इज़ सो गुड. ये मैंने इसका ट्राई किया था, एंड देन आई वाज लाइक आई एम जस्ट गोना गेट इट. या इट इज़ रियली गुड. तो मैं भी ना, मेरा मिस्ट कलेक्शन इज़ रियली गुड. आई हैव बीन कलेक्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ मिस्ट फ्रॉम मेनली फ्रॉम बाथ एंड बॉडी बिकॉज मुझे उनकी बहुत पसंद है. सो आई एम डूइंग दैट. But shukr alhamdulillah for everything and all the blessings. You should never forget your blessings, even at times when you think that what do we have. Don't ever say that, because at the end of the day, when you look around, you have so much and so much more than most of the people around you. So just be grateful for that. You guys, I am finally ready.
मैंने कपड़े भी डिसाइड कर लिए and then I am ready now. I'm just waiting for everyone to come pick me up. Till then I am gonna be watching Netflix and yeah, what else can I do? I'm all ready. I even have this dupatta on, so I'm just gonna wait for everyone to be here and then we're gonna go. इतनी देर से I've been waiting for everyone to come pick me up, but now finally they're on their way and फिर हम जाते हैं and then I'm gonna show it to you. मैं बाहर निकली हूँ finally, so they said they were on their way and look at how pretty these are. अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो आए and then we can go because it's already so late, so late. And finally these guys are here. आ गए फाइनली सब मेरे से लेने के लिए, तो लेट्स गो नाउ. क्या अब्दुलरमान तैयार हो गए? हेलो, लेट्स गो नाउ. अब्दुलरमान से हाय. लेट्स गो. मॉम एंड एवरीवन इज पीछे. वहाँ पे बैठी हुई है फुल हीरोइन बन के एंड देयर इज मॉम एज वेल. लेट्स गो नाउ. वी आर फाइनली हियर. वी हैव टू गो टू माय कोलाची, सो वी आर फाइनली हियर. अब लेट्स park and go under. Hi. We are finally here at this place. There's so many people over here, Abhi. I have. This is good. And everyone's having food now. I'm still waiting for Amna. पता नहीं कहाँ चली गई. Oh, she's right there. यहाँ पे अपनी दोस्तों से मिल रही है and everything. Everyone's having food and everything. Finally आमना मुझे मिल गई और आमना को टाइम मिल गया मेरे साथ बात करने का. It's not funny. आमना ने मुझे आज डिसोन कर दिया था because she hasn't talked to me ever since we came here and now her friends are looking at her, so she's embarrassed. And oh, bye. Bye. It's almost 10 and I'm super tired. अब हम कर रहे हैं कि हम जाएं वापस घर and we're probably gonna go in a bit because Abdurrahman, Dad, वाले अभी तक उन्होंने चलने का नहीं बोला, so we're just waiting कि वो बोले कि चलें तो फिर हम चलें. And Amna is still गायब with her friends and Mom and I were just sitting here waiting for everyone. This is Amna. Auntie Shabana में finally आ गई. Everyone's just meeting now. अब जाने का टाइम हो गया है और this is Amna full look. Amna's friend and finally अब फोटो शूट हो रहा है and everything else is done and then हम अब्दुलरमान का भी वेट कर रहे हैं कि अंदर आ जाए and then we're gonna go. अब यहाँ पे चल रहा है. यहाँ पे अभी ये फोटोशूट चल रहा है. फाइनली अब्दुलरमान भी आ गया. We are finally going home now. बिल्कुल रात हो चुकी है. It's around 10 something और आमना के हील्स पहन के तबाह हो गई हैं टांगें. So let's go home. So you guys, that was end of the vlog today. I really hope you enjoyed the vlog and the dawat was really nice. We all had a lot of fun. It was all good and अभी इतने थक गए हैं कि मैं बस finally अभी मैंने घर आई, थोड़ा बहुत कुछ काम था वो किया and now I'm about to sleep because I have to wake up again early tomorrow. So yes, that is all for tonight and today. I really hope you enjoyed the vlog and yes, I'll see you again. Bye bye.